Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम ईरान और जो इसराइल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उसी के एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे विच परटेन्स टू द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सो फार एंड द फ्यूचरिस्टिक रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस वॉर बिकॉज वी नो दैट इन रिसेंट डेज बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट स्पेकुलेशंस हैं भी और थी भी कि यूनाइटेड स्टेट्स माइट डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इन द वॉर और उसके हक में भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, उसके खिलाफ भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। और ये जो स्पेकुलेशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने खुद भी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने डायरेक्ट सरेंडर की बात की है और फिर उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो 2 वीक तक इंतजार करेंगे कि क्या यूएस को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाजरीन। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली मिलिटरीली इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। Obviously, in the case of this conflict, Donald Trump has all the cards with his chest, and he is the one person who will ultimately take a decision whether to directly attack Iran and Iran's nuclear sites or not. But what are the probabilities that United States might get engaged directly with Iran? US directly attack कर सकता है ईरान को। इसकी probabilities किन variables की बुनियाद पे हैं, किन फैक्टर्स की बुनियाद पे हैं, उसके फेवरेबल पॉइंट्स क्या हैं, उनको अब अगर हम एनलिस्ट करें तो दे आर मल्टीपल वन ऑफ देम। लेट्स टॉक वन बाय वन अबाउट ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स। First, at the most important reason is that United States had historically been the most vocal critic of Iran's nuclear program, and particularly Donald Trump has been very critical of Iran's nuclear program. उनका जो far right के लोग हैं, जो hawkish elements हैं, along with Israel, they have been always supportive of a direct hit on Iran's nuclear sites. और हमने कहा कि परसों ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ईरान हैज एनफ कैपेबिलिटीज टू टर्न इट इनटू अ न्यूक्लियर वेपन विद इन डेज एंड प्रॉब्ली वीक्स। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही नेशनल जो इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है उसकी जो हेड हैं उनकी असेसमेंट जो उन्होंने कांग्रेस में दी थी कुछ दिन पहले उसको रिजेक्ट किया है। उनका उनको नहीं पता, आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, व्हाट आई बिलीव इज मोर इंपॉर्टेंट। देयरफॉर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि जो उसका हिस्टोरिकल गोल है टू strip Iran of its nuclear capabilities, उसके लिए this is the ideal scenario, this is the ideal time to hit Iran because उसकी जो above the surface sites and they have been destroyed by Israel, the only site left is the underground, and if not destroyed now, that would be considered by the Iranians as an kind of diplomatic victory, and they might expedite the nuclear activity post-war. Therefore, once in a decades opportunity is there for United States, created not by the US but by Israel. With a minimum cost, United States can achieve its objectives, which is a long-standing objective, but an objective that at least Donald Trump aspired since almost a decade. Second important factor is जो बड़ा important factor नाज़रीन war के लिए, that is the fact that United States believe that Iranian retaliation against Israel is crossing the red lines. हमने देखा कि जो ईरानियन मिसाइल सिस्टम्स हैं they have been hitting Israel with much more destruction than it was anticipated by anybody in Israel or beyond, and therefore हम देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस में हुआ अटैक किया, इसराइल स्टॉक एक्सचेंज को हिट हुआ, कुछ उनके हॉस्पिटल्स पे हिट हुए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हिट हुए। तो ईरानियन स्ट्राइक्स जो हैं दे आर एक्चुअली वीकनिंग Israel, they are eroding Israel's deterrence capabilities. Therefore, United States thinks that it will, before that Israel's deterrence could be further eroded, it is imperative for the US to directly get engaged and help Israel destroy Iran or destroy its major military and political capital and political, hotspots, in order to make sure that Israel wins the war and Israel's deterrence is restored in the Middle East. And this is likely to also significantly enhance US position, US influence and leverage within the Middle East. So in that context, preservation of Israel and by extension the preservation of the US hegemony necessitates US to directly get engaged in the war. Another factor that pushes Donald Trump to go to war is the hawkish elements within Trump administration, including he himself. नाज़रीन, हम जानते हैं कि जो उनके सेंटकॉम के चीफ हैं जो डील करते हैं इस रीजन को, ही हैज बीन ऑलवेज अ वोकल सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ डायरेक्ट सपोर्टर ऑफ अ डायरेक्ट स्ट्राइक
इन ईरान। और इसी के से उनकी जो करीबी लोग हैं, हॉकिश एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं ईरान जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं और खासकर जो रिपब्लिकन्स के अंदर हैं, दे हैव बीन पुशिंग हिम फॉर सम टाइम to have a direct hit on Iran, and therefore that internal pressure by the hawkish element, the extreme far right wing के जो elements हैं, that is also a factor that pushes for the direct strikes inside Iran. Last but not the least is नाजरीन जो Israelis और Israeli lobbies हैं उनका जो pressure है, that is also a factor. We know that Israeli President Benjamin Netanyahu has been pushing the United States for a military strike on Iran for decades. Since 1990s, he has been pushing for this agenda, and now is the best time for the Israelis to put the last effort and convince the United States to go for this war. And therefore, Israel is using all diplomatic and political channels available to convince Donald Trump to directly get engaged and remove the Iranian nuclear threat once for all. तो इजरायली प्रेशर, इजरायली लॉबी जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबीज हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो जो है एक सिग्निफिकेंट प्रेशर बिल्ड कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो एक इस तरह का स्टेप लें जिसमें ईरान को अल्टीमेटली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कंप्लीटली जो है वो खत्म कर दिया जाए उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं, although there are both kind of probabilities that United States might go to war and might not go to war, but at this point of time, it seems that United States is holding its fire. It is trying to give diplomacy a chance. It wants to give Iran a second thought, but it could also mean that United States during this time is preparing to make sure that it is able to contain the conflict if it attacks Iran, and it is able to completely eliminate Iran's capabilities to retaliate against the United States and therefore make the military operation 100% success. But in any case, Nazreen, any decision of the United States to go to war or not go to war is likely to decide the fate of millions of people in this region and the states that are part of this region. And therefore, this could be United States engagement in Iran could be a game changer, not just for the region, but also for the global geopolitics and geostrategy. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.